Hello students, good morning to all of you. I am Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, PLV, and I welcome you in my YouTube channel. In previous lecture, we discussed the two types of communications, that was non-verbal communication and verbal communication. Now, in this session, we are going to discuss about third type of communication, that is visual communication. Okay, it is another method of communication in which we involve the message, we involve the symbols in message, images and pictures. Okay, for this type of communication we use symbols, images and pictures to make others understand our language. The main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding it. Okay, the signs are common for sending any type of message. Okay, whatever language you are known to, that doesn't matter, you will understand easily by looking at the symbol used for communication. It is simple, easy to understand and remains same across the different places. जैसे अगर हम बात करें कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्पीड ब्रेकर के लिए, स्टॉप के लिए या नेक्स्ट जो आपका प्लेस आने वाला है उसके लिए, या फिर आगे अगर कोई रिवर है उसके लिए सेम टाइप के सिंबल सभी जगह पे यूज किए जाते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ यूज ऑफ इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन. नाउ यू कैन सी इन द फिगर ट्रैफिक सिंबल्स कम्युनिकेशन दैट डू नॉट ब्लो हॉर्न. हॉर्न ना बजाएं तो उसका सिंबल जो है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप का बना हुआ होता है. ट्रैफिक लाइट्स रेड, येलो, ग्रीन, दीज आर फॉर स्टॉपिंग द पैसेंजर, फॉर गेटिंग रेडी एंड टू मूव फ्रॉम द रेड लाइट. ओके, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये भी यूनिवर्सली सेम होते हैं एंड दीज आर एक्सेप्टेड एज अ कमांड फॉर ट्रैफिक सिग्नल. साइन फॉर लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट, that is mentioned on your screen. By looking at the symbol mentioned on the gate of toilet, you can find out that which one is made for ladies and which one is for gents. Okay, sign showing the railway crossing. If this sign is mentioned on the roadside, then you will easily understand that from here at some distance there will be a railway track and you should be aware that you have to go slow on this track. Okay, sign of flammable substance. सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इंडियन ऑयल या फिर एचपी के या फिर कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के जो टैंकर होते हैं उनके ऊपर आप वार्निंग टाइप का सिंबल देखते होंगे जिसमें फायर का सिंबल बना होता है. इससे आप समझ जाते हैं दैट सम फ्लेमेबल सब्सटेंस इज फिल्ड इनसाइड द टैंकर. ओके, sign for slippery surface. This sign is used in a triangle. One person is getting slipped from the stairs. Okay, so you will understand that surface is slippery and you should be next is sign to pause a video or audio file. वीडियो और ऑडियो फाइल को पॉज या प्ले करने के लिए आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है. पॉज के लिए 2 लाइंस होती हैं पास पास में. ओके, 2 बार टाइप की ड्रॉ होती हैं, उससे आप समझ जाते हैं दैट दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर पॉजिंग द वीडियो एंड द ट्रायंगुलर सिंबल इज यूज्ड फॉर प्लेइंग द वीडियो. ओके, सो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड फोन्स in nowadays they are using symbols for operating your mobile. ओके, तो मोबाइल में आप लोग सिंबल्स को देख के ही समझ जाते हैं कि कौन से कमांड का क्या यूज है और कौन सा सिंबल हमें किस तरफ इंडिकेट कर रहा है एंड व्हाट एक्शन इट विल परफॉर्म. ओके, सो दीज ऑल आर साइंस विच आर यूज्ड फॉर जनरल कम्युनिकेशन फॉर ग्रुप्स and for people of society. It is very easy to understand the command which is shown by the symbol mentioned. So this is all about
visual communication, in which you do not use any type of language or any type of words. You just put some symbols and images by which person is able to understand what message a sender want to deliver. Okay, now we are coming to our next topic. Till now we have covered the types of communication. There were three types of communication. Verbal communication, in which we were using words. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग किसका यूज करते थे, बॉडी के जेस्चर्स और पोस्चर का यूज करके हम लोग कोई मैसेज सेंड करने की कोशिश करते थे. ओके, देन थर्ड टाइप वाज विजुअल कम्युनिकेशन, इन विच वी वर यूजिंग इमेजेस एंड सिंबल्स to make the other person understand your message. Now in this session we are continuing with pronunciation basics. Pronunciation का मतलब है in the way in which we talk the words in our language. Pronunciation is the way you say a word or a language is spoken. जिस तरीके से आप किसी वर्ड को बोलते हैं, that is called pronunciation. If we do not say or pronounce words correctly, other cannot understand what we are saying. Okay, if you are not using the words correctly, then one person will not be able to understand what we want to say. For taking an example, एक word होता है WORD, that is word. Okay, और एक word होता है WORLD. If you do not pronounce these two words clearly, then the person who is receiving message will not be able to understand which word you are using in your language. word का pronunciation WORD word करते हैं, और जो हमारा संसार होता है, जो अर्थ होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं world, WORLD. Okay, so it is very important in communication that how you pronounce the words in front of the receiver of message. To communicate well, when you speak, you need to know how to pronounce word correctly. It is very important for a sender of message or communicator that he should try to talk in a right manner and in a right accent. Okay, correct pronunciation will help you to express yourself in a clear and confident manner. It will also help others understand the words easily. If you are using the words in correct accent and the manner you say the words is good, then one person will have ease in understanding your message. So we will learn how to speak properly. A common mistake that people make is when they are not able to pronounce words. Many of the times it happens we are not using right pronunciation for the words given. Okay, or some words are silent in the vocabulary. Suppose KNIFE, knife. Okay, knife में K silent रहता है, but if some people do not know about K is silent in knife, then they will pronounce it as knife. Okay, honor, HONOUR, honor मतलब किसी का सम्मान करना. If you are not aware about the pronunciation of this word, then some people use the word honor as honor. Hours is also a word in which H is silent. So in the same way, if you do not pronounce it in a correct way, then person in front of you will not be able to understand what do you want to say and what is your sense. Say the word aloud. आप लोग इन वर्ड्स को एक बार खुद बोल के देखिए. Your, world, chair and beer. Okay, also try saying these words aloud. इसके नीचे जो वर्ड्स दिए एक बार इन्हें भी बोल के देखें. fall, fail, sail, sail, tail, टेल. एक होता है टेल और एक होता है टेल. ठीक है, तो जरा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा आपके प्रोनाउंसिएशन में, एंड द मीनिंग ऑफ योर वर्ड विल कंप्लीटली चेंज्ड. होल, WHOLE and whole, HOLE. These are two different words, so we should
pronounce all these words in a proper way. Sometimes words which have similar spelling are pronounced differently. ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोगों की स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन सेम टाइप से प्रोनाउंस होते हैं. इसका अपोजिट कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पेलिंग सेम होती है बट दीज आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली. रीड इज अ वर्ड विच मीन्स टू रीड आउट, मीन्स कुछ पढ़ना, कुछ लिटरेचर को पढ़ना. एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ दैट वर्ड इज रेड, READ. स्पेलिंग इज सेम इन बोथ द केसेस, READ, बट द pronunciation makes difference between these two words. If you say I read a magazine yesterday, then person will able to understand that you did that work in past. If you say I read a magazine, that means you are working in present. So it is very important for you as a student and as a marketer that how to use words correctly. A component of pronunciation is phonetics. Phonetics is all about how you pronounce the word, the manner in which you speak the sounds. Okay. Every word is made of one or more sounds, like dog, DOG. There are 3 letters and every letter has a different pronunciation. D is D, O is O, and G is G. So by combining all these 3 words it makes dog. But we should have firm knowledge about the words, that what type of pronunciation should be used with which type of word. Okay, we put these sounds together to pronounce the words. Phonetics is the study of sound that we make when speak. Okay, जैसे कि TALL एक वर्ड होता है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं TALL, दैट मीन्स टॉल. इट इज प्रोनाउंस्ड एज टॉल. बट अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है, देन सम ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इज एज अ टाल मैन. सो दिस इज रॉन्ग वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड डॉग इज मेड ऑफ 3 साउंड्स पुटिंग टुगेदर DOG. स्पीक द वर्ड्स अलाउड एज इट इज शोन इन द figure D, O and G. Dog. Okay, dog नहीं बोलते हैं, dog. बड़े जो हम लोग मात्रा लगाते हैं हिंदी में, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है कि किस एसेंट तक उसका यूज करना है. ठीक है. द वर्ड कैट इज मेड ऑफ 3 साउंड, CAT, K-A-T, T. Cat is used. The English alphabet has 26 letters from A to Z, but each of these letters can be pronounced in different ways in different words. According to the situation, words are used differently. Cat में C का pronunciation